हेलो एवरीवन, मैं बीएल शर्मा मैथ्सो डिस्कसिंग चैप्टर 12 क्लास 10th मैथमेटिक्स दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स and this is exercise 12.1 and the question number first is on your screen. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ये दो क्यूब हैं जिनका एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, द वॉल्यूम ऑफ द अदर क्यूब इज आल्सो 64 सेंटीमीटर क्यूब. दे आर जॉइंड end to end. Means first of all we have to find out the side of the cube, and that is given by side of a cube is equal to cube root of volume. Here volume is 64 centimeter cube, so you find out, put in place of volume you put 64. So side of cube, that is cube root of 64, and cube root of 64 will be 4 into 4 into 4 raised to the power 1 by 3. So that will be 4 centimeter. Side of the cube means length is 4 centimeter, breadth is 4 centimeter, and height of the cube, one cube is 4 centimeter. So here you can write height of cube 4 centimeter. Means each side of the cube, both cubes are same, that is 4 centimeter. Length, breadth and height, that is 4 centimeter. इस तरह से इस क्यूब का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है और वो 4 सेंटीमीटर है. इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर देते हैं एंड टू एंड. देखिए कैसे. सी, नाउ वी ज्वाइन दिस टू क्यूब्स एंड टू एंड. इट इज लाइक दैट. ये हमने दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया है. देखिए, अब ज्वाइन करने से ये टोटल 4 सेंटीमीटर दिस एंड 4 सेंटीमीटर दिस, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर. Breadth is 4 centimeter same and height is 4 centimeter same. So you can write here. This is 4 centimeter plus 4 centimeter, 8 centimeter. So you can write length is 8 centimeter. Breadth is 4 centimeter. And height is 4 centimeter. ये पहले क्यूब था, अब ये क्यूबॉइड बन चुका है. And now apply the formula of total surface area of a cuboid, that is given by twice of length plus breadth, length into breadth plus breadth into height plus height into length. You replace L by 8 centimeter, breadth by 4 centimeter, and H high means height by 4 centimeter. So twice it is 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 8. That is twice of 8 for the 32, 4 for the 16, and 8 for the 32. So twice into 32 plus 16, that is 80, 80 to the 160. So 160 centimeter square is the total surface area of this resulting cuboid. That's all for this question. Question number 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere, mounted by a hollow cylinder. जो खोखला एक हेमिस्फीयर है और होलो एक सिलेंडर है. ये हेमिस्फीयर है, इसका थोड़ा सा सेफ ढंग से नहीं बन पाया. इसके ऊपर माउंट कर रखा है इस सिलेंडर को. देखिए, ये सिलेंडर माउंट किया हमने, ये देखो. And it is given that the height of the whole vessel means the cylindrical portion plus the hemispherical portion, that is 13 centimeters. And diameter is given 14 centimeters. So what is radius? So radius of hemisphere is diameter by 2, that is 7 centimeters. This is 7 centimeter, this is also 7 centimeter. The total height is 13 centimeter. So अगर 7 centimeter कम कर देंगे, then height of the cylinder is 13 minus 7, that is 6 centimeter. इसको विजुलाइज करते हैं. देखिए, ये 6 सेंटीमीटर क्यों हुआ?
क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर क्यों है? देखिए, ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। Radius of hemisphere 7 centimeter. Radius of a cylinder, that is also 7 centimeter. Height of cylinder, that is 6 centimeter. And now inner surface area of the vessel, that is curved surface area of cylindrical part plus curved surface area of hemispherical part. Do you know the formula for it? The curved surface area of cylindrical parts means cylinder is 2 pi r h plus the curved surface area of hemisphere, that is 2 pi r squared. Take 2 pi r common, that is h plus r. Put the value of h, r, radius दोनों का सेम है. So 2 into in place of pi 20 by 7, in place of radius you put 7. Bracket. Height of cylinder, that is 6 centimeter and radius is 7 centimeter. Now calculate and get your answer. Calculate करें, answer find out करें. So that is 44, the 7 and 7 cancel. 6 plus 7, 13. 1344 ja 572 centimeter square, and that's all for this question. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. Hemisphere एक mounted है इसके cone. The total height of the toy is 15.5 centimeter and the radius of cone is 3.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. द रेडियस ऑफ द कॉन एंड हेमीस्फीयर, कॉन और हेमीस्फीयर दोनों का ही रेडियस सेम होगा एंड दैट विल बी हाफ ऑफ द, दैट इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर और 7/2 सेंटीमीटर. ये रेडियस है एंड वी नो दैट radius is 3.5 centimeter. You can write 7/2 centimeter. It is also given that the height of the toy, that is 13.5 centimeter, means here to here, that is 15.5 centimeter. So height of the cone, this is height of the cone. इसको 3.5 लेस करिए 15.5 में, that will be 15.5 minus 3.5, that is 12 centimeter. So this is height of the cone, that is 12 centimeter. Curved surface area of cone is pi r L and curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. हमें slant height चाहिए cone का, means हमें ये चाहिए. Radius is given, height is given. So how to calculate? Using slant height whole square is r square plus s square. In place of r you put 12, so 12 square is 144. 3.5 whole square is 12.25. That is equal to square root of 156.25. Square root आपको find out करना चाहिए. That is 12.5 centimeters. Means this slant height L is 12.5 centimeter. Okay. अभी हमारे लिए आसान बन गया है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन. ये जो कॉन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. Curved surface area of cone is given by pi RL. So pi is 22 by 7, radius is 7 by 2, and L we already have calculated, that is 12.5. On further calculation, that is 137.5 centimeter square. And
The curved surface area of hemi-square, the formula is 2 pi r square. So 2 into 22 by 7 into radius is 7 by 2 whole square. 7 by 2 into 7 by 2. Calculate and get answer. That is 77 centimeter square. अब इन दोनों को ऐड करिए. That will be total surface area. So total surface area of the toy, that is 137.5 plus 77, that is 214.5 centimeter square. Answer. That's all for this question. A cubical block of side 7 centimeter surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have and find the surface area of the solid? देखिए ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसका साइड 7 सेंटीमीटर है. इसको सरमाउंट किया, इसके ऊपर रखा है एक हेमिस्फीयर. ग्रेटेस्ट डायमीटर जो हो सकती है वो देखिए क्या होगा. ये 7 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर. ये हेमिस्फीयर है. इसके ऊपर अगर रखते हैं तो इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो इस साइड के इक्वल होगा. Diameter of this hemisphere is equal to this side, and this side is 7 centimeter, means will be equal to the side of the cube. So that is 7 centimeter. Greatest diameter is equal to a side of a cube, that is 7 centimeter. Total surface area of solid is given by the surface area of cubical block. पूरा क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया होता है, देखो 6 इंटू साइड स्क्वायर. यू नो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये, लेकिन ये जो पोर्शन है इसका, ये सर्कल वाला पोर्शन है, ये कवर अप हो गया, इसको हटाना पड़ेगा आपको. सो एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, सो दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. आप इसको याद रखिएगा. ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको टोटल सरफेस एरिया पूछें तो 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का आप यूज डायरेक्टली करें. इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लें. यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल फॉर्मूला टू लर्न. 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. You have side of cube, that is 7 centimeter, and radius is 7 by 2 because diameter is 7 centimeter. So radius will be 7 upon 2 centimeter. So 6 into 49 plus 77 by 2. This 7 is this 7 cancel. 2 11 ja 22. So 11 7 ja 77. That is 295. Sorry, 294 plus 38.5. Total करिए 332.5 centimeter square. And that's all for this question. मैं BL शर्मा, मैथ साहब. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter d of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. इसको हम विजुलाइज करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, कोशिश करते हैं क्वेश्चन को विजुलाइज करने की. देखिए ये क्यूब है,
और this is a cube. Hemispherical depression. ये देखिए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ये रहा. साइड ऑफ क्यूब एल है, मीन्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों एल है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और इसका जो रेडियस है हेमिस्फीयर का, वो सॉरी डायमीटर है, वो साइड के इक्वल है, मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू एल. सो व्हाट इज रेडियस? सो एज ऑफ द क्यूब इज एल यूनिट. सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज ऑल्सो एल, मीन्स आर, और आर इज इक्वल टू एल अपॉन टू. टोटल जो एल है ये डायमीटर की इक्वल है, तो इसका आधा कर दीजिएगा, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू द एज. सो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ आर, so twice of r is l, so radius is l upon 2. ऐसे क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर. इतना करने के बजाय आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करें, 6 × a² प्लस 2πr² माइनस πr², और यू से दिस वन. इसका क्या एरिया था जब ये इसका है ये माउंट हो रहा था? दैट इज एरिया इज सेम, 6 × a² प्लस πr². प्लीज नोट डाउन, चाहे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हो चाहे माउंटेड हो, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 6 × a² प्लस πr². Here age is L and R is L/2. Put the value and get answer. 6 × L² plus pi R². 6L² pi as it is. In place of R, put L upon 2 whole square. So that is 6L² plus pi into L² by 4. LCM लीजिए, आंसर निकालिए. That's all. आपको फिर मैं कहता हूं, ये फॉर्मूला इसके लिए और दोनों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए आप. A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of the ends. ये देखिए मेडिसिनल कैप्सूल है, यहाँ पे ये एक हेमिस्फीयर दिस साइड एंड वन अदर हेमिस्फीयर दिस साइड है. सो डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, दैट इज डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट. जितना डायमीटर सिलेंडर का है उतना ही डायमीटर हेमिस्फीयर का है. तो रेडियस कितनी होगी? So diameter of cylindrical part, that is diameter of hemispherical part. So radius will be 5/2 because diameter is 5 centimeter. Sorry, 5 millimeter. So radius is 5/2 means 2.5 millimeter. The length of the capsule, total length of the capsule, that is 14 millimeter. So length of cylindrical part is equal to h. Cylindrical part यहां से यहां तक कितना होगा देखिएगा. 14 minus 2.5 plus minus 2.5, that is 14 minus 5, that is ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर रेडियस है. ये सिलिंड्रिकल पार्ट है यहां से लेके यहां तक. सो कितना कम हो जाएगा? दैट इज 9 millimeter. दिस वन ओनली, दिस वन. So radius of cylinder is 2.5 centimeter. Radius of hemisphere 2.5 centimeter. Length means height of cylinder, that is 9 millimeter. So it is the dimensions are in millimeter. Now get answer. The surface of two hemispheres. What is that? Is 2 into 2 pi r² because surface area of a hemisphere, that is curved surface area, that is 2 pi r². So दो है तो 2 into 2 pi r², that is 4 pi r².
So 4 into 22 by 7 in place of radius, put 5 by 2 or 2.5. So on calculating, we get 550 by 7 millimeter square. आपको खुद को भी नोटबुक में पेन लेके इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए. And now the surface area of cylinder, that is 2 pi RH. 2 into 20 by 7 into radius is 2.5. What is h here? This h. 9. So calculating 990 by 7 millimeter square. दोनों को ऐड कर दीजिए. So that is 550 by 7 plus 990 upon 7. That is 1540 upon 7. And that is 220 millimeter square. That's all for this question. A tent is in the same of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. ये एक कॉनिकल टेंट है जिसका बेस सिलेंडर जैसा है. ये देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट है. इसको माउंट करते सरमाउंट करते हैं एक कोन से. ये देखिए ये कॉनिकल टेंट है. बेस पार्ट सिलेंडर, अपर पार्ट cone. What is given? Diameter is 4 meters. Diameter is 4 meters. So it is known that a tent is combination of a cylinder and a cone. Radius of the cone, that is r, that is diameter by 2, that is 2 meters. So radius of cone or radius of this cylinder, that is same, that is 2 meters. Now the slant height of the cone, it is also given, that is 2.8 meter. That is 2.8 meters. Height of the cylindrical part, ये cylindrical part देखिए वाला, and it is given, that is 2.1 meter. It is given. So the required surface area of the tent, that is surface area of the cone plus surface area of cylinder. Surface area of cone is given by pi RL plus surface area of cylinder, that is 2 pi RH. आप अलग अलग सेपरेटली इनको सॉल्व कर लें या इसमें आप कॉमन ले सकते हैं. यू कैन टेक पाई आर कॉमन इफ यू विश. देन इट इज L plus 2H. L is 2.8, H is 2.1 and R is 2. Put value, get answer. Twenty-two to the 44 by 7, 2.8 plus 4.2, that is what? So 44 by 7 into 7. 2.8 plus 4.2, that is 7. 7 and 7 cancel. That is 44 meter square. That is total surface area of the tent. अब क्वेश्चन ये है इसमें कि आपको सेकंड पार्ट ये also find the cost of canvas of the tent. Rate is given 500 per meter square.
So what is cost? Cost is equal to surface area into rate. Surface area is 44 meter square and it is 500 per meter square. So 44 into 500, that is 22,000. That's all for this question. From a solid cylinder whose height is 2.5 centimeter and diameter 1.5 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, cut out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. देखिए ये एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से कोनिकल कैविटी ये होल आउट की है, उसको निकाला है, और जो रिमेनिंग जो पोर्शन है, रिमेनिंग सॉलिड है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? Diameter is given 1.4 centimeter, so radius of cylinder is 1.4 by 2 means 0.7 centimeter. This is 0.7 centimeter is radius of cylinder. लेकिन सिलेंडर का जितना रेडियस है उतना ही रेडियस है कोनिकल पार्ट का. So radius of cone that is also 0.7 centimeter. Height of cylinder, देखिए height of cylinder this is given, height of cylinder is given, that is 2.4 centimeter, it is given. This is 2.4 centimeter. So height, ये देखिए कोन का हाइट भी 2.4 सेंटीमीटर और सिलेंडर का हाइट भी 2.4 सेंटीमीटर है. Total surface area will be given outer curved surface area of cylinder plus area of bottom cylinder plus inner curved surface area of conical cavity. Write the formula 2 pi RH plus pi RS, pi R square plus pi RL. Here L is not there, slant height नहीं है. इसका रेडियस है, हाइट है, लेकिन ये स्लांट हाइट नहीं है, बिकॉज फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन वी नीड एल मीन स्लांट हाइट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट? इसमें आप चाहो तो यू कैन टेक पाई आर कॉमन, सो 2h प्लस आर प्लस एल, लेकिन फिर भी हमें एल तो चाहिए. कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए पाई 20/7 आर 0.7 इंटू 2 × h 2.4 प्लस आर 0.7 प्लस स्लांट हाइट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आप फॉर्मूला देख चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में. सो आर स्क्वायर इज 0.7 होल स्क्वायर प्लस एच इज 2.4 होल स्क्वायर. अब नाउ यू कैलकुलेट एंड गेट आंसर. अब गेंद बॉल आपकी तरफ है, आपको कैलकुलेशन करना आना ही चाहिए. ट्वेंटी टू this is cancelled into 0.1. 2.4 into 2, that is 4.8. This 0.7 as it is. Plus how to calculate this? Square root of 0.7 whole square plus 2.4 whole square. So 0.7 whole square is 0.49. 2.4 whole square is 5.76. So that is square root of 6.25. And that is equal to 2.5. So in place of this square root of 0.7 whole square plus 2.4 whole square, you can write 2.5. 22 into 0.1, 4.8 plus 0.7 plus 2.5, that is 8. So that is 7.6 centimeter square answer.
क्वेश्चन में यह है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक लिखो, तो आप यू कैन राइट दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. That's all for this question. That is approximate value. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. ये देखिए फिगर गिवन है आपके पास. ईच हैंड से दोनों तरफ से आपने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आपने कट आउट किया है, और इसका जो रेडियस है वो और हाइट दोनों गिवन है. रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ height of cylinder, it is also given 10 centimeter. Total surface area that is 2 pi RH plus 2 pi R square. That is 2 pi R H plus R आप कॉमन ले लीजिए. So 2 into 22 by 7 into 35 by 10 multiplied by 10 plus 35 by 10. ये 3.5 कैन बी रिटन एज 35 by 10. डेसिमल हटा दीजिएगा. सिंप्लीफाई करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. सो दैट इज 297 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 pi r स्क्वायर. 2 इंटू 2 pi r स्क्वायर, क्योंकि दो तरफ है, ये हेमिस्फीयर इधर भी है और इधर भी है, 2 से मल्टीप्लाई करिए. दैट इज 4 pi r स्क्वायर. 4 इंटू 20/7 इंटू 35/10. पाई और आर की वैल्यू पुट करिए और सिंप्लीफाई करिए. बड़े धैर्य के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ आपको सिंप्लीफाई करना होगा. दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो बेस एरिया बोथ हेमिस्फीयर, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेशन का पार्ट आपके पास है. So total surface area of the remaining solid that is 297 plus 154 minus 77 centimeter square. That is that's all for this question. So thank you very much.